So hey everyone, welcome back to the channel. Today, like this is the session. So this is the problem rated 1000 for the third session. We already completed two sessions. So the problem is rated 1000. It's a geometry or math based problem. So we'll be directly starting the question right now. So like I won't be like going through the problem. It's mostly like not that useful information. So basically we are given two lines of the form y is equals to minus x plus qi and y is equals to x plus pi, and we are only given these constants which is pi and qi. And now we are given a list of pi's. So basically we are given a list of pi, so these many lines exist, y is equals to x plus pi. N lines exist of the form y is equals to x plus pi, and similarly m lines exist of the form y is equals to minus x plus qi. Now what we have to tell is how many, like given all these lines, how many of them intersect at integer coordinates. So basically if you see, uh, this is an integer coordinate, so both x, so basic they intersect at x comma y, and both of those x comma y should be integers, not positive. They both just should be integers. So minus 1 comma 1 over here, 1 comma 2 up here, and 0 comma 3 over here. So you basically have to give these points the count of these points. So basically it's nothing, it's simple equation solving. So we'll directly start now, like the approach. Okay, so what's that called? Yeah, okay. Yeah, so we are given, so let's just, so basically if you know maths, so we are given basically, one second, I'll just change the color. Yeah, so suppose we are given two equations, right? Y is equals to x plus c1. I'm just staying at c1, and y is equals to minus x plus c2. So we are basically given these two lines. So if we want to find the intersection point of these two lines, we basically have to solve the equation. So we can solve we can solve it in many ways. So let's just equate both of them as y is at the LHS. So x plus c1 is basically equals to minus x plus c2. 2x is equals to c2 minus c1, and x is equals to c2 minus c1 by 2. So we have the solution of x. Similarly, if you put x in any of these, like any of these equations, so you will get y is equals to c2 minus c1 by 2 plus c1. I'm just making it like this, and then yeah, y is equals to c1 plus c2 by 2. So we have these two solutions, or like given these two equations, we have solved for y and x, and we know that c1 and c2 are constants. So this is basically solution of these two equations, and this is where the lines would be intersecting, right? Now एक बार निकाल दिया कि कहाँ पे intersection हो रहा है, now you know where the points are intersecting. Now you have to figure out when those values would be integers. So you have x as c2 minus c1 by 2, and you have y as c1 plus c2 by 2. Now when would this be an integer? Obviously when c2 minus c1 is even. Similarly, when would this variable be an integer? When c1 plus a c2 will be even. When c1 plus c2 would be even. Both of these cases would only be satisfied when both c1 and c2 are odd. Or even, sorry, odd or even. C1 and C2 are both odd, or C1 and C2 are both even. They won't be working in case of when one of them is even and one of them is odd. या तो दोनों को even होना पड़ेगा, या तो दोनों को odd होना पड़ेगा. So now we know that given a list of C1, like given a list of CIs, like अगर कुछ C1 का कुछ एक लिस्ट है, कोई मतलब बेसिकली हमें P और Q में दिया है, C1 C2 लिस्ट है. सो हमें कुछ C1s दिए हैं, अगर P और Q ले लेते हैं यार, अच्छे से समझेगा. सो बेसिकली फाइनल इक्वेशन कुछ ऐसा होगा, x इज इक्वल्स टू सम पी आई माइनस क्यू आई बाई 2 को इवन होना पड़ेगा. सिमिलरली सम पी आई प्लस क्यू आई बाई 2 को वो होना पड़ेगा इंटीजर. सो नाउ अभी हमें फिगर आउट हो गया, उन्हें इंटीजर होना पड़ेगा. सो नाउ व्हाट टू डू? तो हमें पता है कि या तो दोनों ऑड होने चाहिए या तो दोनों इवन होने चाहिए. तो सपोज हमें p का कुछ ऐसा लिस्ट दिया. लेट्स जस्ट टेक द फर्स्ट एग्जांपल ओनली. p का मैं लिस्ट दिया 1 3 2.
और हमें क्यू का लिस्ट दिया है 0 3 तो पहले ऑड वाला केस संभलते, तो मैं ऑटोमेटिकली इवन समझ आ जाएगा। तो इसमें से ऑड का अगर लिस्ट निकाले तो क्या क्या है, 1 और 3, इसमें निकाले क्या है 3। सो बेसिकली एक टाइम पे दिस वन विल गो विद दिस 3, देन दिस 3 विल गो विद दिस 3। तो थोड़ा और अगर क्वेश्चन को एक्सटेंड करते, सपोज यहाँ पे 5 भी होता, ठीक है, वहाँ पे अगर 5 भी होता तो यहाँ पे 3 5 होता है, राइट। सो 1 और 3 एक बार, मतलब अगर अगर P सिलेक्टेड एट अगर P सिलेक्टेड एज 1 एंड Q सिलेक्टेड एट 3, तो ये दोनों करते इंटरसेक्ट, क्योंकि हमारा लास्ट में क्या बनता फिर C2 - C1 इवन, C1 प्लस C2 ऑल्सो, मतलब P और Q बेसिकली, हाँ। P - Q/2 इवन होता, P प्लस Q/2 भी इवन होता, मतलब इंटीजर होता। और न्यूमरेटर में न्यूमरेटर वुड हैव बीन एन इवन नंबर। तो P1 एंड Q3 तो मैं मिल गया। सिमिलरली P, ये सब ऑड है तो इन सब में चलेगा, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो तुम। सो अगेन P1 Q5 में चलेगा। तो बेसिकली P अगर 1 है, Q अगर 3 है, उसमें को तुम्हें पता है ना P क्या है। P इज बेसिकली y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वो वाला P इसके कुछ लिस्ट दिए, एंड y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस क्यू, Q's के कुछ लिस्ट दिए। तो P1 Q3 सिमिलरली P1 Q5 सिमिलरली 3 एंड P3 Q5। तो तुम बेसिकली देखोगे तो इट इज़ बेसिकली नंबर ऑफ ऑड्स, लाइक नंबर ऑफ ऑड नंबर्स इन P इंटू नंबर ऑफ ऑड नंबर्स इन Q, उसका मल्टीप्लिकेशन है ये, जो ये तुम्हें लिस्ट मिला है। सिमिलरली तुम ऐड करोगे, सेम चीज़ इवन के लिए भी एप्लीकेबल है, राइट। तो n इज इक्वल्स टू इवन ऑफ P प्लस n इज इक्वल्स टू इवन ऑफ Q, सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन। तो ऑड्स का, दोनों में ऑड्स के काउंट का मल्टीप्लिकेशन प्लस दोनों में इवन्स का मल्टीप्लिकेशन, दैट विल गिव यू कि कितने इंटरसेक्शंस हुए बेसिकली। अगर ये, क्योंकि ये पीस और क्योंकि हमने कॉम्बिनेशन कैलकुलेट किए, राइट, या तो दोनों ऑड है या तो दोनों इवन है, तो वही लाइंस हमेशा इंटरसेक्ट होंगे। नाउ इफ वी गो टू द कोड, मतलब ऑलमोस्ट वही लिखा है, मतलब पूरा वही लिखा है। तो फर्स्ट यू गेट n, C1 n है, यू रीड द इवन एंड ऑड। तो तुमने बस रीड कर लिया कि लाइक ये C1 का लिस्ट था, हाँ, बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स दिए थे तुम्हें C1। तो बेसिकली अपने एक्सप्लेनेशन में दिस वाज P का अरे था। तुम्हें एक बार मिल गया C1 में कित मतलब फर्स्ट वाले कॉन्स्टेंट्स में कितने ऑड और कितने इवन है, सिमिलरली इसमें भी मिल गया कितने ऑड कितने इवन है। द आंसर इज सिंपली ऑड इंटू C1 प्लस ऑड इंटू C2 प्लस इवन इंटू ऑफ C1 ऑफ इवन इंटू 2। So ये था, like it was simple. All you needed was basic equation solving and geometry. So yeah, if you have any doubts, please feel free to ask me. Bye.